Start today's lecture. Uh, we have already discussed about the method of manufacture of butter. So we have covered so far up to the testing of cream for butter manufacturers. So we have already go through the testing which is required for butter making. I have already told you that when we standardize the fat level in cream, then we can actually meet not only meet the legal standard, but at the same time we can able to produce uniform quality butter. So what test is required, we have already discussed. So now after standardization or pasteurization I have already covered in previous class. Now comes into the cooling and aging. So cooling and aging, which is also one of the most important factor for affecting the quality of the butter. Not only quality point of view, but it is also from commercial point of view, because this this not only affecting the profit of the dairy butter making industry, but also because when you not go properly, you are going to lose use fat into the buttermilk. So what is the cooling? What is the cooling and aging? So what is the purpose of cooling and aging? We can see here. So generally cooling and aging is actually recommended when we talk about summer. So in summer the cooling temperature is generally 7 to 9 degrees centigrade, whereas in case of winter season you can maintain a temperature 10 to 13 degrees centigrade. So 13 degrees and 10 to 30 degrees centigrade in case of winter, but in case of summer you have to maintain the temperature 7 to 9 degrees centigrade. So how this can affect? Because if the fat present in the cream is not crystallized during cooling, कब crystallize होगा? When we provide है ना freezing temperature, then the rate of cooling has also important influence on the body and texture of the butter. So this one also affecting the your quality of the butter. So generally हम वैसे टेम्परेचर को चुनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट, बट here in Indian climate generally we recommending 10 degree average is sufficient for the controlling the body and texture of the butter. So another one is that when we providing too low, because this process actually allow the proper churning of the cream. After churning of the cream, then you can get butter granules, and the buttermilk, which is after the churning process we are getting from the cream, that is buttermilk. That is, if you are not maintaining the proper cooling and aging, then we can definitely higher fat loss will come into higher fat loss in the buttermilks. So aging means storage. Aging kya hua? That is means simply keeping the cream at lower temperature for almost 15 to 16 hours. Then during that period the fat present in the cream is solidified, and that will help, or that will facilitate the churning process properly. So ultimately we can able to get butter from the after churning of cream. So what is the purpose of cooling and aging? The main purpose is to reduce fat loss. When we cannot keep the proper temperature, suppose you are keeping higher temperature, then definitely the fat will be melt and it goes with the butter. Not only it will not only goes with the butter, but it will also affect the quality of the butter, because the lower chain fatty acid, जो lower chain fatty acid होगा, इसका उसका solidifying point कम होगा. उसी तरह से जैसे हायर solidifying point है और boiling point है, जैसे palmitic acid, स्टीरिक एसिड, इस सब का solidification point बहुत ज्यादा होता है, हार्ड होता है उसका फैट.
So depending upon the type of milk, depending upon the size of the fat globules, that will also affect the quality of the butter. So generally we get better butter in case of buffalo milk, because large fat globules are actually present, so that we will get more butter from the buffalo milk. Whereas in case of cow milk, we are getting the butter of good quality, but generally we can get lesser yield because of the lower fat globule size. So the process, aging process also क्या करता है, crystallize butter fat globules, or it the aging is the only process which actually provides the proper churning and able to give best texture of the butter. And agar hum abnormally, when we keep the temperature very low, definitely we will get a firm body, and the firm body of the cream will not actually not able to, we cannot able to actually churn the butter, because we have to get a butter get a cream in such a way, the proportion of soft fat and hard fat in such a way, so that we can properly control the churning process. So here we can actually mixing the proper proportionate of the fat globules, mixed fat and soft fat and hard fat. तो हार्ड फैट सॉफ्ट फैट में पता है तुम्हें, ब्यूटारिक एसिड जो ये सब जो होता है, कैप्रोइक एसिड, ये सब। लेकिन हार्डर फैट के लिए जो स्टीरिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड है, ये सब है सो हार्डर फैट बनाता है। तो हायर कूलिंग टेम्परेचर करोगे तो डिफरेंटली शॉर्टिंग द churning period, but we are getting more fat loss in the case which is goes with the buttermilk, and we are getting very soft butter which is not desirable from consumer point of view. So these are the actually advantage or purpose of cooling and crystallization. Now comes into the ripening of cream. So this is actually optional process, or we can traditionally we are preparing makhan. That is the one of the traditional method of makhan. Makhan and butter, we have already discussed about the difference between both the product. So traditionally our makhan is actually fermented by our ancestors. But here we can, if we require more flavor in your butter as well as in or even in ghee, so we have to go for ripening process. What is ripening? Ripening is nothing, just fermentation of cream with desirable starter cultures. Starter culture क्या होता है? Starter cultures are those cultures which are actually intentionally added to the milk or similar or others to get the desirable flavor, texture in the finished product by producing acid or aroma, or producing flavor and aroma into the product. So there are so many starter culture which is actually recommended for addition of cream to get the proper flavor in the butter. So there are so many bacteria which is actually recommended. So lactic acid bacteria, when we see the lactic acid bacteria, then Streptococcus cremoris, which is also dahi culture, one of the culture of dahi. Similarly, Streptococcus diacetylactis, this is also responsible for flavor development of the butter. That is, they are actually creating diacetyl compound, which actually contribute to the flavor of the butter. Similarly, Streptococcus lactis, they are also contributing the same diacetyl compound into the butter. So other culture which is responsible for the flavor development in the butter are Streptococcus citrovenom and Streptococcus leuconostoc or citrovorum or leuconostoc dextranicum. I am not listed here. These are the other culture which are also used, which is also added along with these culture. So we are getting
then we can say what should be the amount of what should be the amount, and when we have to how we will get the get the desired flavor in the finish in the butter. So when we, so first of all, cream, we are taking cream, then the cream is sterilized. After sterilization, we can go for pasteurization of cream. After pasteurization, we will cool the cream to up to 22 to 25 degrees centigrade. Then we are adding the mesophilic culture. These are the generally these are mesophilic culture. They are, and it is added at the rate of 0.5%. Generally, we are adding at the rate of 0.5 to 2%, but it depends upon the starter activity. And what is the activity of a starter culture? Suppose our culture is not very active, the starter activity test is also generally conducted to assess the activity of the starter culture. We will give you brief picture in the next class, but here we are actually assessing the acidity. Generally, we are actually measuring the acidity of the starter culture. When the acidity of the starter culture is more than 0.95, but when we determine the acidity of cream, so when we getting the acidity more than 0.95, then we can say that the starter activity is very high, very active, so the concentration will be less. So you can add 0.5% also, but suppose the activity is 80%, starter activity is 80%, so then you have to add up to 2% of starter culture. But less than 80%, then that is not recommended for addition. And after addition of the culture, you have to incubate the cream for 15 to 16 hours, generally at 21-22 डिग्री सेंटीग्रेड. और इसके बाद हम लोग जो है next 60 after 16 hours we can realize that some flavoring compound, the main compound is diacetyl compound that is actually formed during the ripening of cream. Here we can say what are the different objective of the ripening of cream. So here the main objective to produce characteristics, flavor and aroma, and for that we are actually adding Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris, Streptococcus diacetylactis, Leuconostoc or Streptococcus dextranicum. So these are actually added to get the characteristics, flavor and aroma. और मेन पर्पस और क्या है? To obtain exhaustive churning. Exhaustive churning we can only obtain when the cream becomes ripened. Similarly, the spoilage microorganism control through biosteric effect of lactic acid bacteria. So, because when we add the lactic acid bacteria to the cream, generally they are actually retard the growth of pathogens as well as putrefactive bacteria. So these are also advantages when we add the lactic acid bacteria to the cream. So we can also control the growth of spoilage microorganisms और also pathogens तो already सब मर ही गया है हमारा pasteurization के बाद. So here we can actually control the spoilage of cream by the through the bacteriostatic effect of lactic acid bacteria, because they are releasing some compounds. हमने बताया था तुम्हें एक बार कि जो मिल्क होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, they are containing some antimicrobial compounds. जैसे मैंने बताया था lactin 1, lactin 2, lysozyme, immunoglobulin, फिर lysozyme, उसके अलावा lactoferrin, ये सब कंपाउंड होता है. they are actually resist the growth of any other bacteria or बैक्टीरिया और ईस्टर्न मोल्ड. तो ये जो भी है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, then these activities actually these compounds are actually no more active, so they are actually destroyed. Then after अब जैसे ही वो खत्म होता है, then सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप का बैक्टीरिया एक्ट करता है ना. among the different microflora, the Streptococcus lactis only grow on the surface of the milk, but when the acidity increasing, then the Streptococcus lactis group of bacteria is died. They are actually died. Then
lactic acid bacteria is going to develop, and after certain acidity level, these bacteria is also destroyed. These bacteria are also inactive. Then, again pH is very low, acidity is very high, and that low pH, we know that the yeast and mold are actually growing. And after yeast and mold growing, then they are releasing proteases enzyme, lipases enzymes, which are highly heat stable. है ना? They are actually spoil our butter when we store. So that is why these are also important from manufacturer point of view. So these are also recommended. Here we can see that what is the compound. You can say what is the mother compound. Generally asked in questions also. What are the mother compound for diacetyl? तो मदर कंपाउंड क्या है? एसिटाइल मिथाइल कार्बिनॉल. एसिटाइल मिथाइल कार्बोनेल से ही हमारा वो प्रोड्यूस होता है ना? दूसरी बात क्या है कि जो हम बटर में येलो ग्रीन लिक्विड विथ इंटेंस बटरी फ्लेवर, अगर हम किसी तरह का कलर देखोगे कि जो कॉ मिल्क होता है, कॉ मिल्क क्रीम से जो बनता है, यू आर गेटिंग येलोइश कलर, हाँ, yellowish butter. But when we prepared it from buffalo milk, then we are not getting yellowishness in the butter. So we are actually adding, we are also adding exogenally or by external sources. We are actually adding flavoring compound, where we are adding coloring compound to the butter, which is food grade, or we are generally collecting it from annatto seeds. We will discuss later. So how we can get the flavor? When the flavor in synthesis, when we measuring the diacetyl content in the butter, and when we found that the content of the diacetyl is in the range of 0.5 to 1.5 ppm, then we can say that the butter content full flavor. हाँ, however normal जो diacetyl content ripened cream में हमारा कितना होना चाहिए? 2.5 ppm, है ना? नॉर्मल डाइस्टार कंटेंट ऑफ रैपेन क्रीम शुड बी 2.5 ppm, ठीक है ना? लेकिन सपोज इफ we are not getting the threshold volume, when that means when we get less than 0.2, the cream become, the butter become flavorless. flavorless मतलब कोई फ्लेवर उसमें नहीं होगा, और 0.2 से 0.6 रहता है, तो when we can get mild flavor in the butter. But when we get the flavor up to 1.5, we can getting full flavor. So these are the aspects we have to discuss. Now there are so many because ripening is a too lengthy process, or there may be chances of also bacterial failure, or there are some attack of bacterial phases on starter culture. Then the cream may spoil. So some manufacturers are also adding synthetic flavor to the cream. So why we are using synthetic color? So because cream ripening is very expensive and time consuming. So मैंने बताया कि ripening के लिए हमें 12 से 15 hours चाहिए. So to reduce the time, we are actually some manufacturers also go for addition of synthetic flavor to the cream. Ultimately goes with the butter. Or another one is that when we add when we get the flavor from the starter culture, but the subsequent process of butter making, like washing of butter, there most of the flavor, most of the acetyl compound, that is diacetyl compound, goes with the wash water. So the flavor intensity is very poor. So that is why natural flavor, because to check the natural flavor, or to get the natural flavor, we are go for synthetic flavor, है ना? तो but the addition is unsatisfactory. क्या होगा इसमें? अगर तुम not properly adding the synthetic flavor, there may be harsh unnatural aroma, which is not desirable from consumer point of view. That will be not accepted in your market.
may lose huge loss to the industry if not properly marketed, not accepted by the consumer. Other क्या है कि they are also lacking lacks per mens per mens तो मतलब lack pleasing mellow and aroma. So इसका जो फ्लेवर और ये जो भी होता है, जो नेचुरल जो हमारा स्टार्टर कल्चर से जाता है, उससे तुलना में इसमें जो फ्लेवरिंग कंपाउंड है और जो प्लीजिंग है वो इसमें कम होता है. Citric acid addition before fermentation process also improves the flavor of the butter. So these are the aspects we have to discuss. Now churning of cream. So what are the synthetic, what are the different type of synthetic flavor which are actually used, है ना? तो जनरली स्टार्टर कल्चर, स्टार्टर डिस्टिलेट और सिंथेटिक फ्लेवर कंपाउंड विच आर एक्चुअली मिक्स्ड विद द स्वीट क्रीम, है ना? और स्वीट क्रीम बटर ड्यूरिंग द वर्किंग प्रोसेस. कब मिलाते हैं? ड्यूरिंग द वर्किंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू गेट द कैरेक्टरिस्टिक्स डाइपेंड क्रीम to the finished product means butter. So these are the aspects. और आर्टिफिशियल जो फ्लेवर होता है, जो सिंथेटिक फ्लेवर होता है, उसमें कौन कौन कंपाउंड होता है? डाइसिटाइल कंपाउंड होता है, उसके बाद एसिटाइल प्रोपेनाइल होता है, एसिटाइल प्रोपेनाइल, और नंबर 3 एसीटोन. एसीटोइन जो है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें सिंथेटिक फ्लेवर में. तो सिंथेटिक फ्लेवर में हमारा 3 कंपाउंड होता है, डाइसिटाइल, है ना, एसीटोन और एसिटाइल प्रोपाइनॉल. These are the actually these are the actually synthetic flavor which are actually present when we add synthetic flavor to the butter, but to the cream. और इसके बाद हमारा जो है churning of cream आएगा. और जैसे मैंने बताया कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर, और एक चीज और बताना था कि what are the factor which actually affect the churnability of the butters. तो उसमें हमने बताया था बहुत सारा उसमें फैक्टर है जो एक्चुअली उसके प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है. किसके? चर्नेबिलिटी जो होता है, जो हम बटर बनाने के क्रम में जो चर्नेबिलिटी है. So there are so many factors which actually affect the churnability of the butter. Number 1, composition of fat. तो कंपोजिशन ऑफ फैट का मतलब है कि किस तरह का फैट प्रोफाइल उसमें है, कॉ मिल्क से है, बफेलो मिल्क से है कि और मिक्स मिल्क से है. सो दीज आर आल्सो अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द बटर. नंबर 2, साइज ऑफ द फैट ग्लोबुल्स. इफ द लार्जर द फैट ग्लोबुल्स देन डेफिनेटली द yield of the butter will be more, है ना? Generally in buffalo milk we are getting higher yield in comparison to the cow milk. Percentage fat in cream. Suppose you are not maintaining the level of cream 30 to 40%, then we cannot getting the 80% fat in the finished product. So we can lacking in the maintaining the recommendation level of the FSSI. So fat percentage in cream should be also affected the churnability of the cream. अगर हमारा ज्यादा क्रीम में फैट होगा तो चर्नेबिलिटी में दिक्कत करेगा, अगर कम रहेगा तो भी हमारा दिक्कत होगा. तो प्रॉपर होना चाहिए. तो उसी तरह से जैसे हम लोग चर्न है, चर्न में जो उसका लोड है वो हम पूरा फुल लोड नहीं करके चर्न करेंगे. कब करेंगे? 1/3 से 2/3 के बीच में उसके जितना कैपेसिटी है उसका 1/3 या 2/3 हम लोग उसको फिल करते हैं, तब चर्न करते हैं. when we visit dairy industry along with you, then you can see the butter churner which are actually installed in dairy premises. तो उसमें क्या होता है, देखिए पूरा फुल नहीं करता है कभी, 3/4 बहुत एफिशिएंसी यूज करना तो 3/4 यूज करेंगे. तो 1/2 से 3/4 हम लोग रिकमेंड करते हैं कि उसी के बीच में यूज करना चाहिए. उसके बाद पीरियड ऑफ एजिंग. मैंने बताया कि जब ज्यादा एजिंग करोगे, ज्यादा देर तक करोगे तो सॉलिडिफाइड ज्यादा होगा, तो सॉलिडिफाइड ज्यादा होगा तो चर्न जब करोगे तो बटर फैट लॉस बटर मिल्क में ज्यादा होगा, है ना? उसी तरह से अगर टू लो टेम्परेचर करोगे तो क्या होगा, वो मेल्ट करेगा और जब हमारा एक्सेसिव बटर लॉस फैट में होगा, बटर मिल्क में एक्सेसिव फैट लॉस होगा. उसी टेम्परेचर ऑफ चर्निंग. टेम्परेचर ऑफ चर्निंग, तो टेम्परेचर ऑफ चर्निंग में क्या होगा कि अगर हम जैसे गर्मी में थोड़ा सा ज्यादा ठंडा रखते हैं, जिससे बताया 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड. क्यों? क्योंकि बहुत गर्म रहता है, तो उतना देर तक उसको टाइम मिले ताकि वो
मेल्ट ना हो, और वही जाड़े में हम लोग 9 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकमेंड करते हैं, और ओवरऑल 10 डिग्री करते हैं। तो कहने का मतलब इसमें है जो अगर टेम्परेचर ऑफ चर्निंग अगर तुम ठीक नहीं रखोगे तो डेफिनेटली वी आर गेटिंग द लॉस, और मोस्ट ऑफ द बटर मिल्क गोज विद द बटर मिल्क गोज विद सॉरी मोस्ट ऑफ द फैट गोज विद द बटर मिल्क। इसी तरह से एसिडिटी ऑफ क्रीम, अगर एसिडिटी ज्यादा होगा देन चर्निंग जब तुम करोगे तो फैट लॉस भी ज्यादा होगा। और यही नहीं, अगर एसिडिटी ज्यादा होगा so the keeping quality of the butter is also affected. The keeping quality of butter will be poor in case of sour cream. No doubt, although we are go for double neutralization to reduce the acidity content of the cream to the desired level. So depending upon the use of the butter, we are actually utilize the cream. But as such, when we prepare the cream from sour cream, prepare the butter from the sour cream, definitely we will get the poor shelf life of the butter. So these are the aspects we have to discuss. Now, tomorrow we will discuss, yeah, if next class we will discuss about the churning of cream. Have you any query? You can ask any question if you have any query. बताओ, बटर मिल्क फैट का कितना होता है सॉलिडिफाइंग पॉइंट? बताओ, बटर मिल्क का सॉलिडिफाइंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? पढ़े होगे ना केमिस्ट्री में, नोट कर लो। सॉलिडिफाइंग पॉइंट जो होता है बटर बफेलो मिल्क फैट का 16 से लेके 28 होता है, 16 टू 28, है ना। और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना, और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 32 से 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट? 32 से 42.5 डिग्री से। गुड। उसके बाद जो हमारा बफेलो मिल्क का जो फैट होता है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड कितना में होता है? शॉर्ट चेन फैटी एसिड जिसका की मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा और सॉलिडिफाइंग पॉइंट भी कम होगा। तो पढ़े होगे केमिस्ट्री में कितना रहता है? अरे C4 से लेके कितना C12 तक जो होता है, माने 4 to 12 is to, है ना, 0। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या कंट्रीब्यूट करता है? They will make the fat, will make the cream soften, or we will get the softer butter when we prepare the cream to having higher concentration of unsaturated fatty acid. तो इसमें किसकी में मात्रा इसका ज्यादा होता है? कॉ मिल्क में ज्यादा होता है, ठीक है। उसी तरह से जो लॉन्ग चैन का फैटी एसिड होगा उसमें क्या होगा, वो हार्डनेस कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। लेकिन हम बताए थे कि हार्ड अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, फैट लॉस बटर मिल्क में ज्यादा होगा। इसलिए क्या है, बफेलो मिल्क का जो फैट होता है स्पष्ट रूप से हार्डर होता है कॉ मिल्क फैट की तुलना में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको, और बफेलो मिल्क में जो हाई मेल्टिंग ट्राइग्लिसराइड्स जो होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है वो 8.7 होता है, जबकि कॉ मिल्क में 4.9 होता है। तो जितना हम इंक्रीज करेंगे सॉफ्ट फैट, वो क्या करेगा, जितना हम लोग सॉफ्ट फैट इंक्रीज करेंगे वो क्या करेगा, चर्निंग पीरियड को छोटा करेगा, शॉर्टन द चर्निंग पीरियड, है ना। इस तरह से हम लोग बटर का जो फर्नेस जो इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है, फर्नेस जो बटर का होता है वो डिपेंड करता है किस पे, व्हाट इज द प्रोपोर्शनल ऑफ सॉफ्ट फैट और हार्ड। और उसके बाद भी एक चीज बताया क्या, सॉफ्ट फैट में भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, तो वो दैट विल आल्सो मेक द सॉफ्ट फैट, है ना। तो दिस एस्पेक्ट वी हैव टू डिस्कस। और कॉ मिल्क का सॉलिडिफाइंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बताओ, मेल्टिंग पॉइंट कॉ मिल्क का कितना होता है, कॉ मिल्क फैट का सॉलिडिफाइंग पॉइंट बताओ। अरे केमिस्ट्री में बताया गया होगा ना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 24 डिग्री सेंटीग्रेड, किसका, कॉ मिल्क का, है ना। सॉलिडिफाइंग पॉइंट मतलब जो उसका सॉलिड होने की प्रक्रिया है, ये कब होता है, जब हम कूलिंग और एजिंग करते हैं, है ना। तो इसी वजह से हम लोग उसको 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, सॉलिडिफाइंग पॉइंट उसका होता है। और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 28 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से बफेलो मिल्क फैट का
होता है। और दोनों फैट जानते हो कि दोनों दूध का फैट डिफरेंट ट्राइग्लिसराइड से बना हुआ है, दोनों का फैटी एसिड प्रोफाइल अलग है, काउ मिल्क का अलग है, बफेलो मिल्क का अलग है। फिर उसमें जो जितने इसेंशियल फैटी एसिड है, नॉन इसेंशियल, जो सबका कंसंट्रेशन अलग अलग है, और दैट एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू द फर्मनेस ऑफ द बटर। तो दिस एस्पेक्ट वी हैव टू डिस्कस टुडे। और एक किसी तरह का क्वेरी है, बताओ। टेम्परेचर से क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। हाँ, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज होगा। हाँ डिक्रीज होगा। तो उससे क्या होगा, जो हम चर्निंग करेंगे वो चर्निंग में ज्यादा टाइम लगेगा हमको, है ना। वो क्या करेगा, चर्निंग के प्रोसेस को मतलब इफेक्ट करता है। तो इसलिए सब चीज का टेम्परेचर टाइम से डिसाइड घटेगा। है ना। इस तरह से हम लोग जो है इसको ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। और you can also see the these are the pictures you can see here. That is the milk reception tank, that you can see. And by use of cream separator we are getting cream, and that cream is actually, है ना, that cream is actually, you can see different packaging devices, you can see, है ना. The cream is standardized, or cream is actually pasteurizes here. आफ्टर पास्चुराइजेशन, है ना, ये क्या है, कूलिंग में जाता है उसके बाद एजिंग, जो हमने बताया कि 15-16 घंटा करते हैं, they are goes with this one. And after that they are actually go for churning or working. When we see the continuous butter making plant at Nalanda Dairy project, you will visualize these all the processes actually continuously. When we keep the cream from one side, we are getting the butter from the other side. So here after aging देखो churning और working होता है, और उसके बाद हमारा बटर जो है वॉश करते हैं, वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करने के बाद हमारा जो है वो प्राप्त होता है। उसके बाद फिर हम लोग है सो उसको बल्क पैकेजिंग के लिए और रिटेल पैकेजिंग के लिए रखते हैं। और उसको फ्रीजिंग पॉइंट कितना, -23 से बताया था ना, -29 तक इसको रखते हैं, है ना। उसके बाद थॉइंग का मतलब समझ रहे हो, when we because after freezing, when we provide any consumers on that temperature, we will not actually observe the quality of the butter. So the butter is actually kept for some times, so they can come to the room temperature. इसके बाद फिर हम लोग इसको कंज्यूमर पैकेजिंग करते हैं छोटा छोटा, और फिर इसको हम लोग कंज्यूमर को देते हैं, और उसके बाद फिर ये रिटेल डिस्ट्रीब्यूट होता है। यू कैन सी हियर, so these are the some pictures you can see here, that is used for the butter manufacture. These are the batch process, not continuous process, है ना। तो you can see here also these are the process we have already discussed, and now we'll discuss the remaining process in the next class. ठीक है, ठीक। तो और कोई क्वेरी है तुम लोग का? थैंक यू सर। और कोई क्वेरी है तो बताओ। और कुछ पूछना है? नो सर। चलो, तो ठीक है। तो हम समझते हैं कि आज के लिए काफी है, तो इसको बंद करें। थैंक यू सर। नहीं पूछना है ना कुछ? थैंक यू सर। ठीक है, प्रतीक्षा का आवाज है लेकिन पिक्चर तो नहीं है। कितने लोग आए हो? थैंक यू सर। ठीक है, चलो ओके। थैंक यू सर। ओके, 15 लोग हो, लेकिन उस समय तो बहुत कम लोग थे। चलो, ठीक है।